કાઢું પણ ચાલુ થાય. Namaskar. Good morning, everyone. How are you all? Good morning, beta. Namaskar. So kids, let us start our today's class with prayer. Okay, the day before yesterday what we done? We done, yes, water vehicle and one air vehicle's name in our notebook. Okay, and homework is also in our notebook. So let us start today's class in our notebook. Take out your notebook, pencil, eraser. But before it, we pray to God. So join your hands, close your eyes. Join your hands, close your eyes. Aditasya namaskaram ye kurvanti dine dine janmantarashah shreshu daridram nopajayate. Aditasya namaskaram ye kurvanti dine dine janmantarashah shreshu daridram nopajayate. Now rub your hands, everyone, and put them on your eyes and face, and slowly open your eyes. So kids, how you feel? Yes? Okay. So everyone, now we will start our class work in our notebook. Okay, but before it, we will see some flashcard about our topic. Okay, so let us start. Why we see all the time this flashcard, that you know, kids? Because it is revised and remember, आपको याद आ जाएगा कि what we done, and ये स्पेलिंग तो ही याद रहेंगे जब आप देखेंगे कोई उसके पिक्चर्स, राइट, विथ पिक्चर. एंड दिस इज अभी तो जो आ रहे स्पेलिंग वो बहुत बड़े बड़े हो गए. सो इट इज क्वाइट इजी फॉर विथ इट्स पिक्चर. सो लेट अस स्टार्ट. आई विल शेयर माई स्क्रीन हियर, एवरीवन. So kids, this is a bed and this is a road vehicle. There are three types of vehicles: road vehicle or land vehicle we call. Yes, land पे जो चलते हैं जमीन पे उसको बोलते हैं road vehicle और land vehicle. So first is this, and then second is water vehicle, and third one is air vehicle. So in the road vehicle, it is car, moves on the road, and it has 4 wheels. Okay, its color is yellow. Now this one is water vehicle, ship. Ship is a big water vehicle and it moves on the water, and it has so many rooms inside the boat. Okay,
we have many facilities, we get many facilities. इसमें स्विमिंग पूल भी होता है, बहुत there is so many rooms and big वाले जो बॉल होते हैं वहाँ पर बड़े बड़े होल भी होते हैं जिसमें everyone take together and get party or whatever. So it is a big, ship is a very big means of transport. What is the spelling of sheep? Sheep, sheep, S-H-I-P, ship. Now next is air vehicle. This is a air vehicle that moves in the air, and aeroplane is a big air vehicle. इसमें बहुत सारे people एक साथ जर्नी कर सकते हैं, right? When we have to go outside of the abroad, we use aeroplane because वो बहुत long distance हो जाता है, दूसरे country में जाना होता है, उसको abroad बोलते हैं. तो वहाँ के लिए हम क्या यूज करते हैं? एरोप्लेन. बिकॉज कई जगह पे रोड भी नहीं होते हैं क्योंकि हिल्स एंड वैलीज होती है, राइट? कहीं पर रिवर्स होते हैं, कहीं पर सी दरिया होता है. तो वी डोंट गो इजीली विथ हेल्प ऑफ रोड व्हीकल, राइट? तो इसमें हम क्या यूज करते हैं? एरोप्लेन और एयर व्हीकल. जो भी एयर व्हीकल होते हैं वो यूज करने से हम जल्दी भी पहुंच जाते हैं, एंड रोड व्हीकल में जो ऑब्स्टिकल आते हैं वो कहीं हिल्स एंड वैलीज होती है, वहां पर रोड नहीं होते हैं, पर एयर में तो ऐसे इजीली पहुंच सकते हैं. सो वी यूज एरोप्लेन. सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ एरोप्लेन? AEROPLANE, एरोप्लेन. और एरोप्लेन में वन मोर थिंग इज दैट कि वहां पर कोई ट्रैफिक भी नहीं होता है और कहीं पर स्टॉप भी नहीं होता है. स्टॉप होते हैं तो वहां पर लैंड हो जाते हैं एंड देन अनदर टाइम इट टेक ऑफ करते हैं एंड लैंड होता है. तो इट इज वेरी फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, राइट? एंड वन मोर थिंग इज दैट कि जब वेदर खराब होता है तो एरोप्लेन भी लेट पहुंचते हैं. वेदर मीन्स कि जब रेन आती है, बहुत बादल होते हैं या अंधेरा होता है तो प्लेन भी फ्लाई नहीं कर सकता है, उसमें कुछ दिखता नहीं है, एंड सो उसमें भी चेंज करना पड़ता है टाइम. सो इट इज देयर. नाउ नेक्स्ट I will show some land vehicle that is cheap. It is moves on the road or land. It has 4 wheels. How many wheels it has? 4. Now next is bike. B-I-K-E, bike. Bike have 2 wheels. What is it, kids? This is bus. Bus have 4 wheels, and we use bus when we have to go थोड़ा long distance में जाना हो तो we use bus. Okay. This is and van. This one is bicycle. Bicycle have 2 wheels. This one is scooter. S-C-O-O-T-E-R, B-I-C-Y-C-L-E, bicycle. It has also 2 wheels. This is truck. Truck have many wheels because इसमें जो पीछे की लोरी होती है उसमें बहुत सारे लोड भरा होता है. So it needed more wheels, right? ज्यादा व्हील्स की जरूरत होती है वरना वो चल नहीं सकता है. Now this is horse cart. Horse cart is a run with the help of animals. Horse cart, camel cart or bullock cart, right? And it is environment friendly vehicle. ये कोई environment को harm नहीं पहुंचाता है, इसमें से धुआं नहीं निकलता है. Now next is helicopter. Helicopter is a air vehicle. It is small air vehicle. Next is hot air balloon. HOTAIRBALLON. Hot air balloon हम हमारे एंजॉय करना होता है, हमें स्काई का व्यू देखना होता है, एंड तो हम हॉट एयर बलून
हम इजीली यूज कर सकते हैं, अम्यूजमेंट्स के लिए होता है ये। तो हमें कहीं इसमें जाना नहीं होता है, पर हम पूरा व्यू देख सकते हैं, ऊपर जाके नीचे का व्यू देख सकते हैं, एंड वी एंजॉय इन द एयर, राइट? So it is for that. Now next is rocket. Rocket is an air transport that is mostly used for science experiment. Now next is yacht. Yacht is a small water vehicle, but it gives us many facilities, right? It is rich. So what is the spelling of yacht? It is Y-A-C-H-T. Now next is boat. Boat is a small water vehicle and it made up from wood. Wood होता है, वो पानी में तैरता है. So it is easily float on the water, right? Now next is submarine. S-U-B-M-A-R-I-N-E. Submarine means run under the water. So kids, our flashcard is over, everyone. Now next we will start our class work. So please take out your notebook, pencil, eraser, everyone, and I will show on the board, everyone. So, kids, this is our board. Now we will write first CW. What we have to write here? CW, and today's date is 7. And month is 10 month. 10 month is, which month is this, kids? 10 month is October. This month is October. Okay, October is the month of festival. You know, everyone? This is 10 month is October month. And year is 2021. So kids, write down in your notebook first of all date, day. Okay, now write down day, Thursday. 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 Thursday is fourth day of the week. Now we will write here heading, that is air vehicle. A-I-R vehicle. V-E-H-I-L-E-S vehicle name. N-A-M-E name. Air vehicle name. Okay, so kids, let us start writing. Sorry.
Now, sorry, I will draw the line. If you want to draw the line, then you can draw the line in between the page. Okay, this is aeroplane, spelling of aeroplane. A-E-R-O-P-L-A-N-E, aeroplane. A-E-R-O-P-L-A-N-E, aeroplane. A-E-R-O-P-L-A-N-E. How to speak? To, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, ऐसे क्लस्टर में आपको बोलना है स्पेलिंग, एक साथ नहीं बोलना है. ओके, A-E-R-O-P-L-A-N-E, aeroplane. Now you can also speak as आपके जो साउंड है अल्फाबेटिकल साउंड वैसे भी आप बोल सकते हैं, लाइक दैट. E, A, R, O, P, L, A, N, A. Okay, so you can easily spell all the long spelling. Okay, आप जो साउंड से करेंगे तो सुनोगे तो भी स्पेलिंग लिख पाओगे. So sound must be clear. Everyone, you can have to speak spelling or the spelling with sound. Okay. So now next, A-E-R-O-P-L-A-N-E, aeroplane. A-E-R-O-P-L-E-P-L-A-N-E, aeroplane. Aeroplane is the big air vehicle that moves in the air. A-E-R-O-P-L-A-N-E. A-E-R-O-P-L-A-N-E, aeroplane. So write down the spelling of aeroplane. So kids, write down the spelling of aeroplane in your notebook, down, full page. So that when you complete it, then I will write another spelling. So next is, everyone done your one spelling in your notebook. Everyone please write quickly. Okay beta. So now next is
Next is another air vehicle, that is helicopter. Helicopter. हेलीकॉप्टर. चलो हम कैसे बोलेंगे इसको? HELICOPTER. ऐसे टू के क्लस्टर में बोलेंगे. टू let us start में बोलेंगे. How to speak this spelling? Okay, so you can speak with the sound. Also, you can speak with the sound. HELICOPTER. Helicopter. Helicopter is the small air vehicle. Helicopter is the small air vehicle. This is small air vehicle. Helicopter is a small air vehicle. HELICOPTER. 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 Helicopter is a small air vehicle that moves in the air. वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं जाता है. हमें जल्दी पहुंचना है और वन सिटी से अनदर सिटी जाना होता है और वन स्टेट से अनदर स्टेट जाना होता है, तो वी कैन यूज हेलीकॉप्टर. अदरवाइज we can use aeroplane. Yes, एरोप्लेन का जो लैंडिंग होता है वो बोलते हैं हम हेलीपैड. हेलीकॉप्टर का हेलीपैड बोलते हैं. एंड एरोप्लेन का होता है जहाँ पर उसको क्या बोलते हैं? एरोड्रम. So everyone, are you done your class work? Okay, do it because it is long spelling. Both are long spelling. So do properly
एक भी वर्ड, एक भी लेटर्स बीच में रह नहीं जाना चाहिए. स्लोली लिखो एंड हैंड राइटिंग अच्छे होने चाहिए. ओके किड्स. Okay. So next हम क्या करेंगे आज? फिर वही राइम बोलेंगे. Yes, are you done your class work everyone? Then you can stand over your place. अपने प्लेस पे खड़े हो जाइए. Please complete your class work first. Okay, complete your class work. And you have homework is in your second term worksheet, that is page number 6 in your worksheet, everyone. Okay, 6th page in your worksheet, everyone. तो सेकंड टर्म की वर्कशीट है जीके की, उसमें आपका होमवर्क है पेज नंबर 6 इन योर वर्कशीट. चलो, now next is yes, क्या है उसमें? AEROPLANE. Spelling of aeroplane is AEROPLANE. तो आपको वो एरोप्लेन लिखना है. ओके, दैट इज प्रिंट मिस्टेक होगी. सो आपको लिखना है सही स्पेलिंग, दैट इज AEROPLANE, एरोप्लेन. ओके, so now we will start our rhyme. Okay, are you ready with me everyone? Okay, this worksheet में typing mistake होगी, so it is come. Sometimes it is done. Typing mistake हो जाती है. तो चलो stand up हो जाइए everyone. मैं पहले बोलती हूँ, बाद में आप सबको अनम्यूट करती हूँ, पर जब अनम्यूट करूँ तब आपको राइम सिंग करना है आफ्टर मी, एंड आपको एक्शन के साथ बोलना है. एंड आपके जो सारे फैन चालू होते हैं, फैन, सीलिंग फैन, उसको ऑफ कर देना है ताकि वॉइस दूसरा ना आए. ओके, तो ड्राइव लाइक अ पापा, पॉम पॉम पॉम. ड्राइव लाइक अ पापा, पॉम पॉम पॉम. लेट्स have a fun together. Clap, clap, clap. Let's have a fun together. Clap, clap, clap. Drive like a papa, pom pom pom. Drive like a papa, pom pom pom. Let's have a fun together. Clap, clap, clap. Cook like a mama, cook yum yum yum. Cook like a mama, yum yum yum. Let's have a fun together. Clap, clap, clap. Let's have a fun together. Clap, clap, clap. Cook like a mama. Cook like a mama, yum yum yum. Let's have a fun together. Clap, clap, clap. Now knit like a grandma, knit, knit, knit. Knit
like a grandma. Knit, knit, knit. Let's have a fun together. Clap, clap, clap. Jog like a grandpa. Jog, jog, jog. Jog like a grandpa. Jog, jog, jog. Let's have a fun together. Clap, clap, clap. Let's have a fun together. Clap, clap, clap. Laugh like a children. Ha, ha, ha. Laugh like a children. Ha, ha, ha. Let's have a fun together. Clap, clap, clap. Okay, now you will start. Okay, I will unmute you everybody. Continue आप लोग चलो लेट स्टार्ट. together. Let's have a fun together. Cook like a mama, yum, yum, yum. Cook like a mama, yum, yum, yum. Let's have a fun together. Clap, clap, clap. Let's have a fun together. Clap, clap, clap. Knit like a grandma. Knit, 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 knit. Knit means कि हमारा जो स्वेटर होते हैं वो knit करते हैं, बुनते हैं. Knit like a grandma. Knit, knit, knit. Let's have a fun together. Clap, clap, clap. Okay, now jog like a grandpa. Jog, jog, jog. Jog like a grandpa. Jog, jog, jog. Let's have a fun together. Clap, clap, clap. Let's have a fun together. Clap, clap. Now laugh like a children. Ha, ha, ha. Laugh children. Ha, ha, ha. Let's have a fun together. Let's have a fun together. Clap, clap, clap. Very good. Clapping everyone. अच्छे से किया सबने. Very nice. Good. Very nice. Okay. So everyone, our today's session time is also over. So be safe at your home. Namaskar. Thank you everyone. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye. Bye.